बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 10 थर्मोडायनामिक्स में लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 7 में हम आज डिस्कस करेंगे विच कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये तमाम के तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विच एनुअल इम्तिहान के लिए। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाई इज़ द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। मतलब हमारी ज़मीन जो है सन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। देखिए बच्चे, अगर कोई बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो इसके लिए यही बात ज़रूरी है कि अगर एक बॉडी हीट इमिट करे तो दूसरा तमाम के तमाम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सो एक्सप्लेन करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज़ इफ हीट लॉस बाय वन बॉडी इज एब्जॉर्ब बाय द सेकेंड बॉडी ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइनिंग। So fusion reaction take place at sun surface, and as a result tremendous amount of heat energy is produced. So the earth is not a good absorber. It absorbs some part of heat energy lost by the sun. Also during night the earth radiates some heat back into atmosphere. That is why the earth is not in thermal equilibrium with the sun. दूसरा बच्चे क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि when a block with a hole in it is heated, why does not the material around the hole expand into the hole and make it small? इसकी वजह यही है बच्चे कि when a block with a hole in it is heated, the material around the hole does not expand into the hole. Because वजह क्या है? We know that all substance expand on heating and contract on cooling, except few cases. देखिए बच्चे, in solid molecule vibrate about their mean position. When a solid block is heated, its molecule vibrate with a greater amplitude due to increase in kinetic energy of the molecules. As a result, the block water expand. With increase the volume of the block, the molecule around the hole and block are pulled outward of the hole, due to which the diameter of the diameter of the hole क्या इंक्रीज होगा। मतलब जो होल का डायमीटर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है बच्ची शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ थर्मामीटर इज प्लेस इन अ डायरेक्ट सनलाइट, विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ द एयर और ऑफ द सन? Will it read the temperature of the air or of the sun or of something else? देखिए बच्चे, a thermometer register its own temperature. When a thermometer is in thermal contact with an object, the temperature of which we wish to measure, energy will flow between the two until their temperature becomes equal and thermal equilibrium is established. At this stage, the temperature of thermometer will give us the temperature of the body. So a thermometer placed in direct sunlight is in more contact with the surrounding air, so it will read the temperature of the air. इसके बाद ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ चुका है कि द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन। वाई? देखो जी, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन,
the rate of diffusion of a certain gas is inversely proportional to its molecular mass and density. Smaller the molecular mass and density, greater will be the rate of diffusion. is the hydrogen is a, अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है किससे? ऑक्सीजन से। तो देखिए बच्चे, इज़ द हाइड्रोजन इज़ लाइटर देन ऑक्सीजन, so its molecular mass and density is lower than that of oxygen. So the pressure in a gas cylinder containing hydrogen will be leak more quickly than if it is containing oxygen. Question number 5. देखो बच्चे, what happened to the temperature of a room in which an air conditioner is left running in a table in the middle of the room? देखो बच्चे, if the air conditioner is placed in the middle of the room, so the absorption and rejection of heat energy take place in the same room. As a result, there will be no change in the atmosphere of the room. इसके बाद है बच्ची शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि वाई डज द प्रेशर ऑफ द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर इंक्रीजेज इफ द ऑटोमोबाइल इज ड्राइवन फॉर अ वाइल. देखिए, when an automobile is driven for a while, work is done against the frictional effect between tire and roads. As a result, heat energy is produced, due to which the temperature of tire and air inside increases. As a result, the collision of air molecule with each other and with the wall of the tire increases, and hence the pressure of air inside the tire increases. इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि ऑन रिमूविंग द वॉल द एयर एस्केपिंग फ्रॉम अ साइकिल ट्यूब कूल वाई. इसकी वजह क्या है? देखिए, द एयर इनसाइड साइकिल ट्यूब इज एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. So when the wall is removed, the air rushes out from the tube. So the outside atmospheric pressure is less than the air pressure inside the tube. As a result, the temperature of air falls down and becomes cool. इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देखिए जी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन स्टेट इज द हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम. सो देयरफॉर हम जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. लिमिटेशन क्या है? क्यू इज टेकन पॉजिटिव when heat enter to the system and negative when he leave the system. Second है limitation कि W is positive when work is done by the system and negative when work is done on the system. Third number है कि Du must be expressed in the same unit joule or calories. इसके बाद है बच्चे 9 नंबर कि is it possible according to second law of thermodynamics to construct a heat engine that is free from thermal pollution. So no बच्चे, it is not possible to construct a heat engine which is free from thermal pollution because देखो जी, इसकी वजह क्या है
because some part of heat is used to do work against frictional effect. So the second law of thermodynamics also tells us that it is impossible to construct a machine or a device which takes heat from a hot body and convert whole of it into useful work without having a sink to which some part of heat is transferred during the operation. So hence, thus, the efficiency of a heat engine can never be 100%. It is always less than 100% due to thermal pollution. इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस बी ज़ीरो. देखिए बच्चे वी नो दैट dq is equal to nc delta t. So c is equal to dq divided by n delta t. Now in case of adiabatic process, no heat enter the system or leave the system, so we put dq is equal to 0. In equation number 1, c is equal to 0 divided by n delta t means c is 0. So thus the specific heat of a gas is 0 in adiabatic process. Second है कि can specific heat of a gas is infinite. So देखिए बच्चे in case of isothermal process the temperature of the system remains constant. So we put dt is equal to 0 in equation number 1. So we get c is equal to dq divided by m delta t. So c is equal to what? Infinity. So thus the specific heat of a gas is infinite in isothermal process. C है कि can specific heat of a gas be negative. So when we remove the heat from a system, then the heat is taken negative, but by doing so there will be also fall in temperature in such a process. So according to equation number 1, there will be no effect on the sign such that the specific heat of a gas is always remain positive, not negative. लास्ट क्वेश्चन है बच्ची क्वेश्चन नंबर 11. एक इंजीनियर है, इन्होंने एक हीट इंजन बनाया. टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी है 27 मतलब 227 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 227 + 273 केल्विन से आएगा 500 केल्विन. टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी है T2 27 डिग्री सेंटीग्रेड. कन्वर्ट करें केल्विन में तो 27 + 273 से आएगा 300 केल्विन. तो नो यूजिंग फार्मूला कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2 / T1 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बच्चे आएगा 0.4. परसेंटेज में कन्वर्ट करें 40%. तो ये इंजीनियर दावा कर रहा था कि मैंने ये इंजन बनाया है T1 और T2 टेम्परेचर के दरमियान, तो इसकी एफिशिएंसी 45% है. लेकिन जब हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया तो ये आता है 40%. मतलब इसका दावा किया था गलत था. सो दस द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज़ 40% which is less than the claim efficiency which is 45%. So thus claim of inventor is not valid. ठीक है बच्चे. इसके बाद इंशाल्लाह बच्चे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 और वो लेक्चर नंबर 7 इसके बाद होगा इंशाल्लाह कार्नोट इंजन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स and God bless you.